is done is the question that everybody should think into, is the question that we need to address. And I remember reading one of the books of Mr. B.R. Ambedkar Garu, where he says that India is a heterogeneous mess. At that point of view, heterogeneous mess. But I have grown up. Embracing the beauty of India, the heterogeneity, having different colors outside in terms of religion, in imbibing different philosophies that are available outside of different religions, and of different thoughts I'm exposed to. So this heterogeneity, why that, scholar of that level, call it as heterogeneity, heterogeneous mess. Are we making a mess here? Are we not? I mean, the true nature of being heterogeneity, we are not taking the beauty of the garden. Different flowers are there. If you have all similar kind of, colored flowers are there, the garden will never look beautiful. Different flowers of different colors, that's reflecting the beauty of India, and we are making a heterogeneous mess out of it. So that we need to think why we are doing it. Is it because everybody in the class, in the caste, in the religion, are we enclosed? Did we enclose ourselves? And then did we show only the favoritism only to those communities? Can't we see a human as a human? We divide ourselves, we dissect ourselves and see parts of it. We cannot see ourselves as a whole. Please see yourself in a mirror. The head is dissected, the hands are dissected. You're a whole. Damn, you're a whole, and you're all just that mind. And sometimes, and where are we actually? I mean, what are we looking at? It's a bigger question that one needs to address it. See, everybody dreams of an egalitarian society, an equal society, right from, centuries together. When we go back, right from Socrates, Plato, Aristotle, Abraham Lincoln, everybody dreamt of an egalitarian society. Where we stand in the world, if you see, there is only one division called class, and a religious division in certain parts. But when you take India in the class itself, again the caste comes, it's an enclosed class, religion. Again, we have so much of differences, majority, minority. The rights are not equally sensed by people, equally protected by whatever, if you feel so. So there are n number of things that we need to look into when we take a vast subject called a democracy. So Socrates talked about equal and just society. I mean, do you feel that, you are treated justfully? Everyone, each and everyone, if you take an average Indian, it can be of any age, does he think that he is treated justly? Yes, to a certain extent when we compare to our yesteryears. But what else has to be done to feel the sense of just should come into every mind? So we have to go a long way. And then Abraham Lincoln dreamt of civil liberties entire world. So how many civil, how much are they being, given, taken, felt, realized that these are my civil liberties? There are n number of questions. And we are gifted by the French Revolution the three most important principles of democracy: equality, and then fraternity, and then liberty. So are three things independent. They're not independent of each other. They're mutually dependent. If one is attained, the others are also. How many of us we feel that just a child walks in and you think, do you feel it's your blood? A child, no, you just go into the details. To which class, to which caste, to which religion, to which. So we just go into the details. I mean, we want it before we hug the child. He's so cute. He's so bubbly. You don't see him as a human. You want to dissect him. You want to divide him. The moment we start dividing a child, you divide the society. The moment we start our perception towards it,
So I think, I mean, when the change has to come, it has to come from within, from an individual. This is there, it Yes, gets yes. reflected at the higher level, at the ruler, or at the government level. So, so this natural bond that a human has will have to be felt. We need to take out all those things. When do we can when see there are two, three things in that. The way the dominant sections of the society look at the child, the way the lower sections of the society look at the child. Dominant sections, he doesn't, favoritism. And the lower sections, because that I'm discriminated, I'm forced to look at them. Sometimes, you say this is this kind of, the mental makeover, because of the discrimination that you feel, you sense outside. You're likely to look at the child in that way. So a lot has to be done from the up above, up above, in order to see that all humans are treated one and the same. And then these the beautiful ideals of equality and then fraternity and liberty were adopted by the B.R. Ambedkar and the other members of the drafting committee into um, our constitution. And there are an n number of things that say that whether democracy is working or not. So there was one private company, if I remember it correctly, it's Economic Intelligence Wing. It's a private company. It has a democratic index to say whether a democracy is functioning properly in a country or not. So various countries, around 200 countries, have been ranked, and obviously our country, India, did not fare well in that index. And it has taken variety of things into consideration to form this index. So once we go into these details, I think we can actually form an idea of how the democracy works in a country, and where do we stand. So the first and foremost thing is the free and fair elections. So that denotes the checks and balances in the pillars of the democracy. The executive, legislature, and judiciary have independent. They are the separation of powers, and the protection of human rights and treating of its minorities, then realizing their rights, and then freedom of press and the dissent, that is, and the other opinion outside that of the government, how much you entertain that opinion. So all these are indicative of a very good democracy if you're faring well in these indices. But unfortunately, we say that I don't know what parameters that yeah. So with all these things, with all these principles of democracy, each one is mutually dependent on the other. If one is neglected, let's say the realizing the rights of the minorities, and it is the repercussions of that is felt, or realizing the rights of women, repercussions are felt in the entire democracy. So let us the fact check, how do we check that democracy is working well or not? So I would like to ask the participants over here itself, we have been tasting, our families have been tasting the democracy since many years. So I would like to ask you, in your own families, so in your, probably your grandfathers, your generation, your children's generation, and if I see some, the wiser older men in this webinar, so your grandchildren. So when you trace them, so when you just trace, so how many of your family members are occupying the different parts of the society? How many of you are engineers, doctors, scientists, pilots? How many of you are there in politics? How much variety of professions you are in? And how many of you are dreaming big? How many of you are allowing your women to come out and take up the professions? See, this is what is the life? Life is certain objectives, certain goals, realizing myself. I want to occupy this. I want to become an artist. So let me excel in it. Or I want to become a dancer, a singer. I want to, go onto the moon, a rocket scientist.
So I want to go into the politics. I want to be a MLA, MP, CM, PM. So then at local level, yes, why not? So am I dreaming? See, the democracy has the strength of giving dreams to you. How many of your family members, I'm just asking you, for generations together, are you taking the same profession? For generations together, how fluid it was. Did you realize the dream of your father or your grandfather? So how fluid it is. How many members of your family? Please tell me. So I'm here. I myself am a beneficiary of democracy. Yes. Is this the case with everybody? That's what. I'm the beneficiary of democracy. Yes, it has become fluid. Yes, many of the women, they have come out, and the minorities and everybody, they're coming out, they're asking for their own rights. So, but how ideal democracy is something which is 100%, right? So how much percentage of the citizens have tasted the real fruits of democracy? So are all the professions above, do they have the true representation of all the people in the lower sections of the society? If you take democracy as a plant, for example, and it has deep roots into the soil, but it need to absorb the nutrients from all nutrients, all kinds of nutrients, all kinds of minerals, all kinds of vitamins through the soil, from the roots of the democracy, from these pillars of democracy, from these democratic principles. Then the plant will grow into a beautiful tree, bearing beautiful fruits for the future generations. If you just take up few nutrients and bear few fruits, even those fruits are faulty. I can say those fruits are faulty, which are bearing the faulty trees, which are bearing the faulty fruits. So faulty generations. So see, this example of a democracy gives you, I think, the holistic view of the view that I have on democracy. I hope I'm not giving a negative side, but to say that how beautiful that democracy is there is, and how much we should go far ahead to realize that. So the other indicator of democracy is how happy you are. So the happiness index is a true reflection of democracy, is a true reflection of the bearing fruits. We said that fruits is, partly this happiness, how happy we are in everyday life, in giving the life to the children in every form. Or are you and at this juncture, we have come far away, when compared to before the freedom that we got. We have come very far, but is it enough is the bigger question. For some, even now, meeting the basic needs, food, water, and shelter is still a problem every day. Livelihood for many youth is still a problem today. Dignity, respect, honor, treatment without discrimination, all these things, somehow dream to be a distant dream for many. I'm the beneficiary of democracy, but there are but still I'm saying I struggled so hard to be here. When I compare now, my journey should be, each one of you are responsible, outside are responsible. My journey was real tough one, and it is even tough now. Whom should I ask? The same question, my children are going to ask me tomorrow. Whom should I ask? My struggle would have been very easier had I born to somebody else. So this society, the moment you're born, your status is ascribed. Even in America, when Joe Biden was saying, he was praising the democracy, the president of America, right? But even in India,
I mean, we go to America. Most of my friends, if I tell you, they want to go to America. Why? I can, feel more freedom. I have many things at my disposal, better things. As Indians, can't we promise that? Each one of us is responsible. Let me tell you, it is not somebody. And the government is mere reflection. It's a mirror to us. And the responsibilities, as you said, what are our responsibilities? The true game changer of democracy is the right to vote, as you rightly put it in the topic, right to vote. So how many of us are actually voting, educated? The biggest sinners in the society are those who are educated, those who are concerned, those who want justice, but indifferent to the elections and the government, or to the ruling, to the elections, who will come to the power. They're quite indifferent. They are the biggest sinners. You want a just society, please move out. I don't like any representative. You have a nota over there. If everybody votes for nota, then the government will think again. It will move. Yes. Yeah, of course. But please express your opinion. Please express, be a part of this. Why? Aristotle also said rule by many. Abraham Lincoln, democracy, by the people, of the people. Why for the people? When the people, they themselves are indifferent, then what are we? What democracy is there? It's a partial democracy or a defective democracy. What kind of a democracy? So I request each and everybody to realize the importance of the vote. It is deciding our own future. And the youth they have to see, we are, it's a young India, a beautiful young India. Yes. And then each member of that youth have to be educated regarding this. Not only this, the ideas, the democratic principles, B.R. Ambedkar once in his writing I've been reading, said, he says, that the social reform should come first, then the political reform, means then the democracy and all. But he says the seeping of this constitutional, principles into the minds, that is the true democracy. This essence of the constitution, the essence, the beauty of the constitution should be absorbed into the minds of the youth. Then you realize who is a greater representative, who is a good representative. We don't even know who the representative is. We just go and vote for a symbol. Let me tell you. So that actually is a game changer, and we need to. These are the responsibilities. We ourselves, cutting across the divisions, seeing as a whole, human as a human, we should start educating our youth. We should go out, right, to vote. So then we realize the beauty of democracy. We realize, then we come very close to the ideal democracy in the country. So I'm a dreamer, as I said, for egalitarian society. I'm still dreaming, okay, and with my eyes wide open, I'm dreaming to welcome an ideal democracy into the country, wherein there is no difference called majority, minority. They're all equal. There is no difference called upper class, lower class. We are humans. There is no difference called lower caste, upper caste. What is that? What is the caste, basically? It doesn't exist anywhere but in this. So I'm just dreaming. Thank you. ओके एसपी मैडम डॉक्टर चैतन्या जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आपने अच्छी बात कही कि आप एक ऐसा ख्वाब, एक मिसाली जमहूरी निज़ाम का ख्वाब देख रहे हैं। यकीनन वो शर्मिंदा ताबीर होगा तब के सब अपनी जिम्मेदारियों को, एहसास को समझे, जहां पर ऊंच नीच ना हो, जहां पर अक़लियत और अक्सरियत में इम्तियाज ना हो। यही आपका जो है जो एहसास थे, आपके जो जज्बात थे, बहुत ही अच्छे हैं। ये नई नस्ल के लिए भी, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए भी, पूरी कौम के लिए भी आप जो बात कही, यकीनन बहुत ही बेहतरीन और अच्छी बात कही कि हमें
मजहब के, जात या किसी भी रंग और नस्ल के इसमें बंटना नहीं है, बल्कि एक हिंदुस्तानी होकर हमें मुंतखब करना है। अपने आपने जो बात कही, इब्राहिम लिंकन जो अमेरिकी मुफक्किर को कोट किया, डेमोक्रेसी जो उनके अल्फाज में अवाम से अवाम के लिए जो था, उसको भी बेहतरीन अंदाज से आपने पेश किया। बेहद आपके हम मशकूर हैं, ममनून हैं, थैंकफुल मैडम कि आपने एक अच्छा लेक्चर दिया। ये पूरी कौम के लिए, एक सोसाइटी के लिए एक मिसाली लेक्चर है, जिसको समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एजुकेटेड लोगों की ये जिम्मेदारी, मैं ये समझता हूँ एज ए स्कॉलर, एजुकेटेड लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो दूसरों तक समझाएं। हमारे पास ये चीजों को थोड़ा हो रहा है। तो अब ये हम पहला वेबिनार है, इसमें हम क्वेश्चन और आंसर का सेशन नहीं रखे, लिहाजा अब जब आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन और आंसर भी हम रखते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब जनाब मैं गुलाम मोहम्मद मोहिउद्दीन साहब, जो कॉलमिस्ट हैं और जो डायरेक्टर हैं, एक एजुकेशनिस्ट हैं, से उनसे गुजारिश करता हूं, हैदराबाद के कई तालीमी इदाराजात को चलाते हैं और उसके डायरेक्टर हैं, मोहतरम गुलाम मोहम्मद मोहिउद्दीन साहब से गुजारिश करता हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब गुलाम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, ममनून मशकूर हूं मैं आपका। आप लोग जो है मुझे मौका दिए कुछ बोलने का। पहले तो मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। मैं एक मुफस्सिर हूँ और एक बुक का ऑथर हूँ, और तेलंगाना के स्टोन आर्ट पे मेरा रिसर्च वर्क है। और मैं दो जो है मेरे पास इंस्टीट्यूशंस हैं, AU वुमेन एजुकेशनल एकेडमी के तहत, जिसमें मैं एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ। खास तौर पे जो मेरे काम है, वो काम में जो है वुमेन एजुकेशन पे मेरा जो है ज्यादा एम्फेसाइज है। स्पेशली बैकवर्ड एंड वीकर सेक्शन के जो बच्चे लड़कियां हैं, उनके लिए ग्रुप 1 ग्रुप 2 की कोचिंग गुज़िश्ता 5-6 साल से जो है मैं फ्री जो है कोचिंग कर रहा हूँ, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 की सर्विस। मैं और मेरा एक सर्कल है, हम लोग काम कर रहे हैं। आपका जो टॉपिक था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे काम होना चाहिए, डेमोक्रेसी पे। और मैं चूंकि बच्चों की लाइफ से जुड़ा हुआ हूँ और एक अरसे से मैं काम कर रहा हूँ बच्चों के साथ, तो उनमें जो बिजारेपन है डेमोक्रेसी से रिलेटेड, उन बच्चों में जो बिजारेपन है डेमोक्रेसी से, मैंने देखा कई बच्चे, नौजवान बच्चों से। मैं कई एक कोशिश करा डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन के लिए। मेरा फेसबुक पेज है अबू गफरान नाम से, मैं उसमें कई एक जो है अवेयरनेस वीडियोस वगैरह भी रन करता हूँ और बच्चों से बात करता हूँ मैं, और जो है कम्युनिकेशन जो है डिफरेंट लेवल पे करता हूँ बच्चों से, और कोशिश करता हूँ कि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करने के लिए हम लोग हर मुमकिन कोशिश करें। तो जो मैं बुनियादी मसला जो समझ में आ रहा है मुझे, वो ये है कि हम सियासी जमातें खासतौर पे जो इख्तिदार पे हैं, वो लोग बुनियादी सहूलतों पे ख्याल नहीं कर रहे हैं बच्चों का। कई एक बच्चे जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, कई एजुकेशनल फैसिलिटी, तो कई एक जगह बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, पानी की फैसिलिटीज नहीं है, तो कहीं स्टॉक शॉर्टेज है, कई एक चीजें हैं, कहीं पर बसेस की फैसिलिटीज नहीं है। तो जो बुनियादी तौर पे जो हुकूक मिलने चाहिए एज ए सिटीजन, वो नहीं मिलने की वजह से कई लोग जो है डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। होप माय वॉइस इज कमिंग एवरीवन। होप मेरी आवाज आप सबको आ रही होगी, आई बिलीव। तो मैं जो आपकी आवाज आ रही है सर, आपकी आवाज। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। तो मैं जो किया, जो बेसिक हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू हेल्थ, ये टोटली पॉलिटिशियंस जो हैं नेग्लेक्ट करे हुए हैं। हमारी स्कूल्स की हालत और हमारे हॉस्पिटल से हमारी आवाम इतनी मायूस है, वो लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। मैं पर्सनली जो है मुख्तलिफ महलों में, मेरा ताल्लुक हैदराबाद से है, मेरा मकान याकुतपुरा और गोलकोंडे किले में है, और मैं ये 2 एरिया में बहुत काम कर रहा हूँ एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड। तो मैं जहां जहां जा रहा हूँ तो लोगों में मायूसी है कि बच्चों के पास अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नहीं है, अच्छे हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस नहीं है। तेलंगाना गवर्नमेंट की जो खास ये जो तेलंगाना रेजिडेंशियल स्कूल्स जो स्टार्ट करें, उसमें थोड़ा एक होप आई है पेरेंट्स में, लेकिन स्टिल
हेल्थ सेक्टर इज टोटली नेग्लेक्टेड। तो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करना है, अगर हमको इसको हेल्थी बेनिफिट लेना है, जैसे कि यूरोप फायदा उठा रहे हैं डेमोक्रेसी का, या अमेरिका फायदा उठा रहा है डेमोक्रेसी का, और डेवलपमेंट की तरफ वो लोग बढ़ रहे हैं, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दे के हम आवाम को कन्विंस करने की कोशिश करें कि भाई आपको हम ये चीजें जो है मिलती रहेंगी, तब जाके जो है कोई चीज मामला बनते। तो हम एज ए सोशल एनजीओ या जो है एजुकेशनिस्ट, हम पब्लिक में जो है सोशल इश्यूज पे अगर हम आवाम सरकार को मनवाना अगला 5 साल कोशिश करें, 5 साल का हमारा एक 5 ईयर प्लान बनाए कि 5 साल में जो पब्लिक के जो बेसिक राइट्स हैं, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू हेल्थ, ये 2 चीजों को अगर हम सॉल्व करने में कामयाब हो गए तो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करने में कामयाब पाते। मैम की जो स्पीच थी एसपी मैम की, मैं सुना, इट इज रियली इंस्पिरेशनल एंड रियली वेरी वैल्यूएबल फॉर टुडेज यूथ। मैम जैसे मैंने ये भी स्टार्ट करी थी कि जितने रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं ग्रुप 1 सर्विसेज के, वो लोग कम से कम 2-3 हफ्ते अ वीक शुड बी इन पब्लिक टू सॉल्व देयर ग्रीवेंसेस, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस रखते सोसाइटी में एंड गवर्नमेंट ऑफिसेस में। दे शुड यूज देयर इन्फ्लुएंस एंड कम इन पब्लिक लाइफ। वो लोग जब आएंगे और पब्लिक में घुल मिलेंगे और जो है उनका जो बेसिक डिमांड्स है उसको सॉल्व करने में मदद करेंगे 2-3 घंटे, आई एम श्योर कि इसका इतना पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा कि आने वाले इलेक्शंस में पब्लिक जरूर बाहर निकल के वोट देंगे। और जो लेस परसेंटेज वोट हो रहा, जैसा कि कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के हमारे सर अंजनी कुमार साहब बोले थे, लेस देन 50% जो है तमाम मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो है इलेक्शन वोटिंग परसेंटेज चल रहा। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे पास बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिली और हम कॉर्पोरेट माफिया के रहम करम पे आ गई है पब्लिक। कॉर्पोरेट माफिया, स्कूलों में जो फीस स्ट्रक्चर जा रहा 35,000 3,500 मंथली से शुरू होके 4 लाख तक फीस स्ट्रक्चर जा रहा। माँ बाप कैसे देंगे फीस इतने बड़े बड़े? तो उनके लिए स्कूलिंग का इंतजाम करे तो माँ बाप का, गवर्नमेंट स्कूल से स्टार्ट करे तो माँ बाप का नियरली 50% जो हेडेक है फीस पे करने का वो खत्म हो जाता। गवर्नमेंट स्कूल पे हमको काम करना है, मैं भी काम कर रहा हूँ। मैं जहाँ इश्यूज हैं, हैदराबाद सिटी तेलंगाना का जो है एक कैपिटल सिटी है और इतना बड़ा शहर है, यहाँ पर दरमियान में चार मीनार के एक निजामिया तिब्बी कॉलेज है, वहां पर 10 साल से फैकल्टी नहीं है, 10 साल से। और जो कॉलेज है मेडिकल कॉलेज है, यूनानी तिब्बी कॉलेज है, वहां पर पानी की फैसिलिटी नहीं है। रेस्पेक्टेड गुलाम, मैं प्लीज रेस्पेक्टेड गुलाम मोहम्मद मोहिउद्दीन साहब, प्लीज टॉपिक जो है हमारा है जमहूरियत है, राइट टू वोट है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। प्लीज अपने शिकायतें हैं, ग्रीवेंस, उसको हम बाद में देख लेंगे। प्लीज आप टॉपिक पर आपकी फाइंडिंग, आपके मकाले की जो फाइंडिंग है, प्लीज उसी टॉपिक हम हर इश्यू पे बात करेंगे बाद में, हर जब मौका जाएगा। अब हमारे प्लीज इस टॉपिक पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी वोट टू राइट पे प्लीज बोलिए, क्योंकि ये जो वेबिनार है इसकी जो अहमियत है, हमें अवायर करना है पब्लिक को अवायर करना है, उनमें सवालात पैदा करना है और उनको जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना है। प्लीज कि हम क्या करें, प्लीज आप अपने फाइंडिंग और अपने जो कंक्लूडिंग है उसी पर आप देंगे, क्योंकि अगर हम इसी पर अगर शिकायतों पर अगर इस तरीके से खुलासा करना बैठे तो हमें पूरे 365 दिन भी कम नहीं होंगे। हमें पॉजिटिव वे से हमें आगे बढ़ना है, वक्त भी बहुत थोड़ा है और भी लोगों को हमें सुनना है, क्योंकि हमारे साथ माहिरीन, विकला और जो स्कॉलर जुड़े हुए हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अपने फाइंडिंग और जो टॉपिक से पर बात करें प्लीज। जज़ाकल्लाह। मैं कंक्लूड करूंगा विद इन अ मिनट ओनली। ओके, थैंक यू। मेरा मकसद ये था बोलने का कि हम अगर डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं तो पब्लिक इश्यूज पे बात करना चाहिए, पब्लिक इश्यूज को सॉल्व करना चाहिए, तो पब्लिक कॉन्फिडेंस में आएगी। 12 हमारी अपील और 12 डिफरेंट कोशिशों से पब्लिक कन्विंस होने वाली नहीं है। जब तक कि उनके पास बेटर हेल्थ केयर, बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं रहेंगी, वो लोग पार्टिसिपेट जमहूरियत में पॉजिटिवली नहीं करेंगे। बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। Thank you very much for the time and I appreciate honorable all guests. Jazakallah. Thank you. तो बेहद मशकूर ममनून है मोहतरम गुलाम मोहम्मद मोहिउद्दीन साहब, आपने अच्छी बात रखी, क्योंकि मसाइल भी जो है जरूरी है कि जब तक मसाइल हल हो जाएंगे तभी जो है एक हेल्दी डेमोक्रेसी बन सकती है। लोग जो है तरक्की कर सकते हैं। जब समाज तरक्की करेगा, समाज जो है
पूरी तरीके से वेल जो है अच्छा रहेगा, सेटल रहेगा, तभी एक उसमें जो है मुस्बित वे भी आएगी। आपने अच्छी बात कही। इसके बाद मैं जो है तेलंगाना रेजिडेंशियल स्कूल, जो माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल है, उसके जो है एकेडमिक कंसल्टेंट, उसके जो जनाब मोहतरम लतीफ साहब से गुजारिश कर सकता हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब मोहम्मद लतीफ साहब। शायद हमारा लतीफ साहब से राब्ता नहीं बन पा रहा है। मैं जनाब खलील अहमद साहब ताज खलील अहमद साहब ताज जो है अलमक्का एजुकेशनल सोसाइटी नारायणपेट के सदर हैं और इंतहाई एक मारूफ समाजी कारकुन हैं। अलहुदा सोसाइटी के लिए भी उनका जो है ताउन रहा है। वो जो सोशल वर्क है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो 5 मिनट अपने ख्यालात का इजहार करें। जमहूरियत, हक़ राय दही और हमारी जिम्मेदारियां, यही टॉपिक है और इस पर सदर मोहतरम अल मक्का एजुकेशन सोसाइटी जो अलहाज खलील अहमद ताज हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि वो टॉपिक पर अपने ख्यालात का इजहार। जनाब खलील साहब ताज, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? प्लीज प्लीज आप अपना माइक ऑन करिए, आप अपना स्पीकर ऑन करिए। स्पीकर ऑन करने के बाद आप प्लीज। खलील साहब, खलील साहब आप अपना स्पीकर, आप अपना वॉल्यूम बढ़ाइए। खलील साहब आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? सबरे साहब वो शायद डिस्कनेक्टेड हो गए हैं नहीं इंटरनेट की वजह से, तकनीकी खराबी की वजह से। जी खलील साहब आप आवाज सुन पा रहे हैं? जी आपकी आवाज आ रही है मुझे। हाँ चलो आ रही है। ओके, आप कनेक्ट हो गए। आप अपने ख्यालात का इजहार करिए। जी जी शुक्रिया शुक्रिया तबरेज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे जो है ना इसमें शामिल करे हैं, आपके इस प्रोग्राम में मदऊ करे हैं और कुछ बोलने का जो है ना मुझे मौका भी जो है ना आप जो है ना दिए हैं, जिसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब चूंकि जो है ना यहाँ पर आज के इस प्रोग्राम में बहुत काबिल जो है ना लोग, बड़े बड़े लोग जो है ना शरीक हैं, ऐसे मौके पे इस उन्वान पे मैं कुछ ज़्यादा बोलना मैं मुनासिब नहीं समझूंगा। बस मैं इतना ही कहूँगा कि जो है ना आज ये जमहूरियत का ही जो है ना देन है, जो आज हम आप जो है ना इतने बड़े पैमाने पर खुलकर बात कर रहे हैं। ये जमहूरियत की ही जो है देन है। पर मैं जो है ना मैं चाहूँगा कि भाई हमारे जो और जो है ना काबिल जो हजरात हैं, जो यहाँ के जो है ना शिरकत कर रहे हैं, उनसे जो है ना मैं उनसे ज़्यादा कुछ ज़्यादा मैं सुनना का जो है ना सुनना चाहूँगा। तो बहरहाल आपने मुझे मौका दिया है, जिसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने जो है ना बड़ी जो है ना मेहनत से, बड़ी कोशिशों से जो है ना आज के इस प्रोग्राम को जो है ना आप मुनाकिद करे हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला जो है ना आपकी जो है ना इस कोशिशों को और कामयाब करे और इसको वसी पैमाने पर जो है ना और इस तरीके से कामयाब जो है ना इस तरह मीटिंग जो है ना करने की जो है ना अल्लाह ताला आपको तौफीक दे। मैं बहरहाल इस उन्वान का तो मुझे जो है ना मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे मालूम हुआ, क्योंकि मैं जो है ना लिंक नहीं हुआ था, मुझे इतबार से इसकी तल्ला नहीं थी। अगर मुझे ज़रा पहले मालूम होता तो इंशाल्लाह मैं कुछ जो है ना इसकी तैयारी करके जो है ना मैं आपको शरीक होता था। इसको इस ताल्लुक़ से कुछ मैं अपना जो है ना अपना जिक्र, मैं अपना ख्याल ज़ाहिर करता था। बहरहाल शुक्रगुजार हूँ मैं आप सभी आपके सभी टीम का जो है ना, जो इसमें जो है ना मुझे प्रोग्राम को जो है ना इसको मुनाकिद करे हैं और मुझे मौका दिए हैं। फिर एक बार मैं आपका शुक्र अदा करते हुए अपनी बात को रखता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी जी मोहतरम अलहाज खलील अहमद साहब, आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ हैदराबाद से जो है तेलंगाना रेजिडेंशियल जो स्कूल्स हैं, टेमरीज जो सोसाइटी है, उसके जो एकेडमिक इंचार्ज हैं जनाब एम ए लतीफ साहब हैं।
जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं जनाब एम.ए. लतीफ साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आज के इस उन्वान पर अपने ख्यालात का इजहार करें। लतीफ साहब। जी जी अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। मैं आ रहा जा रहा था बिकॉज ऑफ सम एक्टिविटीज एंड अदर थिंग। मैं माजिरत चाहता हूं कि मैं पूरी मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि ये डेमोक्रेसी, द राइट ऑफ वोट एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें ख़ास तौर से माइनॉरिटियों में जो बेदारी लाने का निज़ाम है वो हमारे को करना है। इसी के तहत हम लोग भी बहुत कोशिश करे हैं, ख़ास तौर से तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल टीचर्स, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे पास में एक 4000 से 5000 टीचर्स ऑलरेडी है, जो रेगुलर भी है, कुछ आउटसोर्सिंग टीचर्स भी है। तो हाँ, हमारे सेक्रेटरी साहब के तरफ से और हम लोगों के तरफ से हम लोग कम्युनिकेट करके बात किए हैं इसको कि भाई ये बेदारी लाने के लिए हम पर्सनली टीचर्स को कॉल करके बोले हैं कि खास तौर से जो एमएलसी का रजिस्ट्रेशन हो रहे थे वो टाइम पे कि रजिस्टर करने के, तो हमारे को ये ताज्जुब हुआ कि कई पढ़े लिखे लोग भी इसमें रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये चीज़ों को हम लोग ने फिर हाईलाइट किया, फिर हम लोग ने बताया कि भाई एमएलसी का इलेक्शन होता क्या है, एमएलसी के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं मालूम थे कि एमएलसी होता क्या है, उसके डिसीशंस लेने के स्किल्स क्या है, वो इलेक्ट होता है तो किस बेसिस पे इलेक्ट होता है। ये सारी चीज़ों की हम लोग ने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह कई हमारे टीचर्स को हम लोग ने इसमें रजिस्टर किया। इस तरीके से सेमिनार्स या इस तरीके से वेबिनार्स वगैरह होने से फ़ायदा ये होता है कि एक दूसरे के ख्यालात शेयर किए जा सकते हैं। वी कैन शेयर ईच अदर। सेकेंड, जो हमारे में कमियां हैं, जो चीज़ें हम नहीं कर पाए हैं, उस चीज़ पे भी हम लोग कंसंट्रेट कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं। वेबिनार्स और ये सेमिनार्स का बेसिक इंटेंशन यही रहता है कि एक तो नेटवर्किंग होती है, एक दूसरे को पहचानत होती है, जिससे दूसरे काम करने में आसानी होती है। और दूसरा इम्पोर्टेंट जो है, सबसे बड़ा काम ये होता है कि कहाँ कहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, या कोई और ऑर्गेनाइजेशन या कोई और इंडिविजुअल इस तरीके से कर रहा है और हम इस तरीके से कर रहे हैं, तो उस चीज़ को बेहतर तरीके से हम एक दूसरे से सीख के उसको बेहतर बना सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर से अलहुदा वेलफेयर सोसाइटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया और चंद बातें सीखने के लिए भी मिली। और ये कोशिश जारी रहनी चाहिए, इस तरीके की चीज़ें होते रहनी चाहिए ताकि आवाम में बेदारी पैदा हो। सबसे बड़े जो है अवेयरनेस हमारे पास में बहुत कम है, इस चीज़ पे हमको कंसंट्रेट करना है। और इस तरीके से अगर हम करते रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात को पहुंचा सकेंगे। एक बार बात लोगों तक ज़्यादा पहुंचेगी तो अमल भी होगा उसका। तो जज़ाकल्लाह खैर, और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ओके जनाब एम.ए. लतीफ साहब, आपका बेहद मशकूर और ममनून हूं कि आपने अपने ज़रीन ख्यालात से हमें नवाजा। और एक आप एकेडमिक इंचार्ज हैं टैमरीज के, जहां पर आपकी जिम्मेदारियां भी बहुत ज़्यादा हैं और आपके पास जो है एक नई नस्ल जो है आपके पास, जो आने वाले हिंदुस्तान का मुस्तकबिल आपके हाथों में है। तो यकीनन आप उन्हें संवार सकेंगे, एक अच्छे हिंदुस्तान की तामीर कर सकेंगे, इस उम्मीद के साथ। मैं अब जहाँ हमारे बीच बहुत सारे वकला इस पर जुड़े हुए हैं, जो अल-फलाह एजुकेशन सोसाइटी नारायणपेट के सदर और नारायणपेट बल्दिया के रुकन हैं मोहतरम अमीरुद्दीन साहब, इलाज अमीरुद्दीन साहब से उनसे गुजारिश करता हूं कि वो अपने ख्यालात का एक 5 मिनट इजहार करें। जनाब अमीरुद्दीन साहब से गुजारिश की जाती है कि म्यूट जो है, उनका चैनल म्यूट है, उसे ऑन करके आप बात करें। अमीरुद्दीन एडवोकेट, प्लीज आप अपना माइक ऑन करें। अमीर साहब आप अपना अमीर साहब अपना माइक ऑन करें, म्यूट है, ऑन कर लीजिए। हेलो, ओके, हाँ बोलिए, बात करिए आप। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही, बात करिए आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खलील साहब भी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सबके चेहरों पे है ना रौनक है, क्योंकि आप जो टाइटल रखे हैं मौजूदा हालात के हिसाब से बहुत जरूरी और फिट है। क्योंकि वोट का राइट जो है वो बहुत पावरफुल हथियार है हिंदुस्तान में। जमहूरियत में वोट की बहुत बड़ी कीमत है, बहुत बड़ी ताकत है। अगर किसी हुकूमत को अगर किसी मामले में अगर
उनसे कुछ मनवाना है, कुछ हासिल करना है अक़लियतों को, तो वोट के जरिए उनको दबा सकते हैं, वोट के जरिए उनको राग़िब कर सकते हैं। तो आज ये जमहूरियत, क्योंकि एक बहुत बड़ी जमहूरियत है, हिंदुस्तान जो है एक जमहूरिया मुल्क है, यहाँ पर वोट का एक हक जो दस्तूर में दिया गया है वो बहुत बड़े हथियार है। ये हमारे लोगों को समझने की जरूरत है, अक़लियतों को समझने की जरूरत है। आज के दौर में पास लोग समझते हैं कि वोट अगर न डाले तो क्या होने वाला है, लेकिन वोट से किसी एक हुकूमत को जो या हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे, वो हुकूमत को भी हम हटा सकते हैं, वो ताकत वोट में है। तो आज अक़लियतों के लिए खासकर हिंदुस्तान में जो मुराद दस्तूर में दिए गए हैं, उसको हासिल करने के लिए सबसे पहले मैं तमाम लोगों से, खासकर पेरेंट्स से, नौजवानों से, बच्चों से अपील करना चाहता हूं कि एजुकेशन में भी आगे जाना चाहिए। जब तक आप अगर एजुकेशन में आगे नहीं जाएंगे तो आपको दस्तूर में जो राइट हुकूक दिए गए हैं वो आपको नहीं मालूम। आपको जो पाठ्या हैं जो आपको सिर्फ इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए तालीम में हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। आज आप ये ऑनलाइन जो रखे हैं, आप एजुकेटेड होने के बाद ही ये इस मौके पर एक आज तमाम लोगों के लिए सुनने का, बोलने का मौका दिया है। अगर हम इसमें अगर तालीम में अगर आगे नहीं जाते तो आप ये लाइन में जो आप आज बात करा रहे हैं, आज खासकर मैं समझता हूँ कि नारायणपेट में पहली मर्तबा है कि ऑनलाइन एक बड़े अच्छे लोगों से बात तमाम लोगों को सुना रहे हैं और अपना हक क्या बता रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ अल हुदा सोसाइटी को कि अल्लाह ताला इस सोसाइटी को तरक्की दे और ऐसे अच्छे कन्वेंशन, अच्छे सेमिनार रखे, अक़लियतों को है ना कई मामले में उनको जो मुराद हैं उसके लिए उजागर करें। मुझे मौका दिया गया है, मैं तमाम लोगों को सोसाइटी के मुबारकबाद देता हूँ। एक अच्छा मौका फराहम किया है, सुनने का मौका दिया है और एसपी मैडम ने भी बहुत अच्छी बात कही है। बहुत खुशी हुई कि एसपी मैडम भी है ना बहुत अच्छी बात करे यहाँ पर और मैं समझता हूँ उससे बहुत सा फायदा होगा और दीगर तमाम लोग भी जैसे बात कर रहे हैं यहाँ पर या ऑनलाइन जो सुन रहे हैं, मैं समझता हूँ तो इससे अक़लियतों में एक उजागर होगा और ऐसे सेमिनार आप ऑनलाइन रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं मुबारकबाद देते हुए खासकर हमारे जो सोसाइटी आलूदा सोसाइटी के जो मेम्बरान हैं, तबरे हुसैन साहब, फजल रहमान साहब, अब्दुल सलीम साहब एडवोकेट, तकी साहब और दीगर जो सदर है हमारे सोसाइटी के, उनको तमाम लोगों को मुबारकबाद देते हुए जो मौका दिया है मेरे लिए, मैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए अपने बात को खत्म करता हूँ और अपील भी करता हूँ कि इसके जो बातें हो रहे हैं इससे अक़लियतों के लिए फायदा होगा और जरूर इससे है ना अच्छे मौके फराहम होंगे और लोगों में हमारा अवेयरनेस भी आएगा। जैसा टिमरीज के ताल्लुक से लतीफ़ साहब भी बयान किए हैं, यहाँ भी एक माइनॉरिटी के ताल्लुक से तेलंगाना में जो हुकूमत यहाँ पर जो काम कर रहे एजुकेशन में अक़लियतों के लिए जो काम एजुकेशन ताल्लुक से हो रहा, उस ताल्लुक से भी बहुत अच्छी बात है। मैं मुबारकबाद देता हूँ कि तमाम सोसाइटी के लोगों को कि मुझे मौका दिया गया है। मैं शुक्रिया अदा करते अपनी बात को खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज। जनाब मोहतरम अमीरुद्दीन साहब, आपका बेहद मशकूर और ममनून हो कि आपने अपने ख्यालात का इजहार किया हमारे साथ। जो है जो नारायणपेट के, एक बड़ी खुशी इस बात की है कि नारायणपेट के विकला हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि आप एक बात जान लीजिए कि हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में भी उस वक्त के वकीलों का अहम रोल रहा है। मैं समझता हूँ कि यह तहरीक बहुत कामयाब होगी, क्योंकि हमारे साथ पूरे एडवोकेट वॉलंटरी जो है रजाकाराना तौर पर शामिल हुए, क्योंकि वोट टू राइट है, हम इस प्रोग्राम में आ रहे हैं। बेहद खुशी है मोहतरम नंदू नामाजी साहब जो एक्स चेयरमैन है नारायणपेट म्युनिसिपैलिटी के, उनका भी हम इस्तेमाल करते हैं और आकुला बालप्पा साहब जो म्युनिसिपल काउंसिल के स्टैंडिंग काउंसिल हैं कोर्ट में, मैं उनका भी इस्तेमाल करता हूँ। नाउ आई रिक्वेस्ट टू आकुला बालप्पा एडवोकेट कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें, जो स्टैंडिंग काउंसिल है नारायणपेट म्युनिसिपल काउंसिल के कोर्ट में। तो बालप्पा एडवोकेट से गुजारिश की जाती है कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। दिगर पार्टिसिपेंट से गुजारिश, अमीरुद्दीन साहब अपना जो माइक है उसको म्यूट कर लीजिए प्लीज, डिस्टर्ब हो रहा है। म्यूट करना चाहता जी। नमस्ते। यस, ओके, वेलकम। इधर जी माइक को म्यूट कर देखो तो। ఓకే జాతీయ ఓటర్ దినోత్సవ సందర్భంగా ఓకే సార్, చెప్పండి మీరు. ఈ జాతీయ ఓటర్స్ దినోత్సవ సందర్భంగా ఓటర్స్ అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ 1989 కంటే పూర్వము 21 సంవత్సరాలు ఉన్న వ్యక్తులకు ఓటర్ లిస్ట్ లో ఎన్రోల్మెంట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి ఓటు హక్కు ఉండేది. 1989 తర్వాత 61వ అమెండ్మెంట్ ద్వారా
18 సంవత్సరాల నిండిన వ్యక్తులకు ఓటు హక్కును ఎన్రోల్మెంట్ లో ఓటర్ లిస్ట్ లో నమోదు చేయడానికి అవకాశం కల్పించిండ్రు. అంటే మనది ప్రజాస్వామ్య డెమోక్రసీ కంట్రీ. ఈ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ఓటు అనేది వజ్రాయుధం. దీన్ని అనుకూలంగా ప్రతికూలంగా కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు. అనుకూలంగా అంటే ఒక వ్యక్తికి అనుకూలంగా, లేదంటే నన్ ఆఫ్ ద అబోవ్ అని కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు. కాబట్టి ఈ ఉపయోగించుకునే సమయంలో ఓటర్కు కొన్ని రైట్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కూడా చూసుకొని దాన్ని ఆలోచన చేసుకొని ఓటు హక్కును వినియోగించుకుంటే మన డెమోక్రసీలో మంచి ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే మన డెమోక్రసీ కంట్రీ ఫర్ ద పీపుల్, ఆఫ్ ద పీపుల్, బై ద పీపుల్ అనగా ఈ ప్రజల ద్వారా మనం ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలని అనుకున్నప్పుడు మంచి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు ఎవరికి ఓటేయాలి అనే ఓటు హక్కును వినియోగించుకుంటే మంచి ప్రభుత్వం వస్తుంది. లేకపోతే ప్రతికూలమైన ప్రభుత్వం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. దీన్ని ఆలోచన చేసి ఓటరు ఎన్నికల సమయంలో ఓటు వేసే ముందు ఏ విధంగా వేయాలనేది ఆలోచన చేయాలి. అయితే ఎలక్షన్ సమయంలో ఓటు పర్సెంటేజ్ ఎట్లా అవుతుంది అని అంటే టౌన్లలో 40 నుండి 50% మాత్రమే అవుతున్నది. అదే విధంగా విలేజ్లలో 90% వరకు అవుతుంది. అంటే చదువుకున్న వాళ్ళే ఓట్లో పాల్గొనడం లేదు ఓటింగ్ లో. అంటే మనము రైట్ టు ఓట్ అని ఎలా అవి అంటున్నామో అదే విధంగా కంపల్సరీ ఓట్ అనేది అమెండ్మెంట్ ద్వారా తెస్తే చాలా మంచిగా ఉంటుంది. లేకపోతే ఈ ప్రజాస్వామ్యము కొద్దిగా మనుగడ భవిష్యత్తులో సాధించడం కష్టం అవుతుందని నా అభిప్రాయం అవుతుంది. అదే విధంగా ఓటు వేసేటప్పుడు ఏ విధంగా వేయాలి, ఎవరికి వేయాలి అని ఆలోచన చేసేటప్పుడు మన రాజ్యాంగాన్ని తయారు చేసేటప్పుడు రాజ్యాంగ నిర్మాతలు ఒక అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. మా దేశ ప్రజలకు ఓటు అనే ఒక ఆయుధాన్ని ఇస్తున్నాము. ఆ ఆయుధాన్ని ఉపయోగించుకొని మంచి ప్రభుత్వాన్ని తెచ్చుకుంటారో లేక ఓటును అమ్ముకొని బానిసలుగా బతుకుతారో ఆలోచించుకోమని చెప్పి ఆనాడే అనుమానం చేశారు. అదే విధంగా ఇప్పటి ఓటర్స్ కూడా ప్రలోభాలకు ఓటై తన ఓటును అమ్ముకోవడం వల్ల అనుకున్నటువంటి వ్యక్తులు ఎన్నిక కాగలేకపోతున్నారు. కాబట్టి ఇటువంటి మన ఈ వ్యవస్థల ద్వారా ఓటర్లను చైతన్య పరిచే కార్యక్రమం చేయాలని ఆశిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు ప్రత్యేక ధన్యవాదములు తెలుపుతున్నాను. హలో तबरेज सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका म्यूट पे है। मोहतरम बालापत साहब आपका मैं बेहद मशकूर మమ్నూన్ మీరు చాలా చక్కగా మంచిగా మీ వ్యూస్ ని పెట్టారు. కానీ మీరు ఒక ఆవేదన ఏదైతే అర్బన్ ఓటర్స్ లో గురించి మీ ఆవేదన చాలా అదే ఓటర్ రైట్ టు కంపల్సరీ పెట్టాలని మీరు చెప్పారు, చాలా మంచిగా ఉంది. దాన్ని हम उसे इस वेबिनार के जो मिनट्स में लिखेंगे उसको भी, क्योंकि जो शहरी इलाकों में जो अर्बन इलाकों में जो परसेंटेज वोटिंग परसेंटेज सबसे कम है, यानी जबकि शहरी अर्बन जो सिटीज हैं, सिटीज में जो है एजुकेटेड लोग ज्यादा हैं, एजुकेटेड होने के बावजूद वोट नहीं डाल रहे हैं, बोले तो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, ये जो है डेंजर है डेमोक्रेसी के लिए। सबको वोट डालना चाहिए, सब बात कर। अब मैं मोहतरम नंदू नामाजी साहब जो वाइस चेयरमैन है नारायणपेट म्युनिसिपल के एक्स वाइस चेयरमैन है मोहतरम नंदू नामाजी साहब, उनसे गुजारिश करता हूं कि वो करें। एक बात मैं मोहतरम खलील साहब से और दिगर जो भी पार्टिसिपेंट हैं वो अपना माइक बंद करें, डिस्टर्ब हो रहा है, बैकग्राउंड आवाज आ रही है इसमें, तो जो भी दिगर हैं जो नहीं बोल रहे वो बंद करें और जो बोल रहे हैं सिर्फ वही चालू रखें प्लीज। राजवर्धन साहब नमस्ते। बहुत धन्यवाद तबरेज जी। देखा आज म्यूट जो डेमोक्रेसी अच्छा आप कोर्ट में हैं, राइट टू वोट एंड आप रिस्पांसिबिलिटी। आइए 2 मिनट लाइन पे, ऑनलाइन वेबिनार चल रहा है हमारा। म्यूट योर साउंड। मीटिंग है आपके पास, आईडी है फोन में, जूम ऐप है आपके पास? तो आमिर भाई का फोन लेके बात ओके नंदू साहब प्लीज नंदू साहब, आमिर भाई के फोन लेके बात करिए। तबरेज का डिस्टर्ब हो रहा सब आते बोल के आप आमिर भाई का नहीं बोले तो मैं आपको यूजर आईडी पासवर्ड शेयर करता हूँ, आप ऑनलाइन पे आइए ना। तो वोटर्स डे है ना आज, वोटर्स डे और रिपब्लिक डे है ना, उसके ऊपर 2 मिनट बात कर रहे हैं। हाँ आप बात करते बोलो फिर। हेलो आए के नंदू साहब 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट
म्यूट करा रहा हूँ आमिर भाई उसको। के आईडी पे बात करिए आप लेके, फोन लेके आमिर भाई का, ठीक है? हाँ पूरा तो ऑनलाइन म्यूट करना, तेरा फोन पूरा परेशान हो रहे सब लोग। आमिर भाई का फोन लेगा और राजवर्धन बात कर रहे हैं। रेस्पेक्टेड एसपी मैडम नारायणपेट गारी की और हमारे सीनियर जर्नलिस्ट माय कलीग फ्रेंड मिस्टर तबरेज and Abdul Salim and other scholars, I welcome heartfully. And today his topic is very interesting, and it's democracy and right to vote and its responsibility. So here we have to think that the Constitution has given right to vote. A person who attained the age of 18 years, he has a right to cast his vote in favor of any person. Here, nowadays, the Constitution has given a right. But here, the person who attained the age of 18 years, he is not in a position to understand what is a weapon. I can use this to elect a rightful person to serve his service towards the society and town. But here, the person who casting his vote without thinking, without using his power, by consuming liquor or by eating biryanis, he is selling his vote to the other persons. It is very unfortunate thing. It is very unfortunate. And nowadays the leaders became like that. He was not on the moral values of the Constitution. A person who elected, he has to serve his service during his entire 5 years. But here, unfortunately, the leaders are became like that only, and the voters also become like that only. अपन को कॉन्स्टिट्यूशन राइट दिया हुआ कि उसको मिसयूज करके सोसाइटी को पूरा गलती करा दे रहे हैं, ये बहुत अफसोस की बात है। और नौजवान के युवक भी आज के तारीख में सोचना है कि अपन को ये वोट का मौका मिला है, इसको सही तरह से इस्तेमाल करें और अपने महिला को भी अच्छा लीडर चुने और अपना गांव भी अच्छा तकरीर में जाए, अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी तकरीर में जाए, ऐसा अपना लीडर को चुनना। और ये जो वोटिंग पावर है, इसको अपन एक वेपन के सर का यूज करके अच्छी गवर्नमेंट को चुना हो। कि मैं स्टूडेंट्स को और आम जनता को रिक्वेस्ट करते हुए और ये मेरे को मौका दिया गया तबरेज जी को और उनको टीम को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम नंदू नामाजी साहब। अब हमारे साथ जो है एक और नारायणपेट के एडवोकेट जनाब राजवर्धन रेड्डी, के कोटला राजवर्धन रेड्डी साहब भी जुड़ गए हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं, के राजवर्धन रेड्डी जो नारायणपेट टाउन के टीआरएस प्रेसिडेंट भी हैं, एक लॉयर भी हैं, कि अपने आज के वोटर्स डे और जो हमारा जो टॉपिक है डेमोक्रेसी, राइट टू वोट और आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अपने जो है जरीन ख्यालात का इजहार करें। नाउ आई रिक्वेस्ट टू मिस्टर के राजवर्धन रेड्डी, एडवोकेट नारायणपेट। हेलो, या ओके, प्लीज स्टार्ट। साहब बहुत खुशी की बात है आज आप लोग ये जो वेबिनार रखे, बहुत अच्छी बात है। और एक चीज क्या है बोले तो आज जो नेशनल डेमोक्रेसी डे कई को बोल रहे वोटिंग का बोले तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हम समझना हर एक आदमी भी वोट का इम्पोर्टेंस जरूरी है बोल के मालूम करना बोले तो बहुत अच्छी बात है। ఇంకొక మాట ఏమున్నదంటే ప్రతి ఒక్కరికి మనం చదువుకున్న వాళ్ళము కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి మనం తెలియజేసేది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు ఓటరుగా నమోదై ఉండాలి, ఉండేటట్టు చూడాలి। అదే విధంగా ఓటు యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏందనేది తెలవాలి అంటే మన లాంటి ఇంటెలెక్చువల్స్ ఇట్లాంటివి అప్పుడప్పుడు పెట్టి
పబ్లిక్ లో అవేర్నెస్ తీసుకొని వచ్చి మనం ఇది చేస్తే బాగుంటది. మీరు ఎవరైతే ఇప్పుడు దీని గురించి మాట్లాడారో వాళ్ళందరూ కూడా చాలా మంచిగా మాట్లాడారు, చక్కగా మాట్లాడారు. అదే విధంగా మనము గుర్తుపెట్టుకునేది ఏంటంటే మనం ఏదో దీంట్లో వెబినార్ లో ఒకటి మాట్లాడితే కాకుండా అక్కడక్కడ మన ఏరియాలో కూడా ఇది ఓటు యొక్క ప్రాముఖ్యతను వివరిస్తే బాగుంటుందని నా ఉద్దేశం. దీనిపైన టిఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున నేను కూడా వీలైనంత వరకు ప్రతి ఒక్కరికి అవేర్నెస్ తేవడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తా. ఈ విధంగా మీరు నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ముగిస్తాను. ఓకే, बहुत बहुत शुक्रिया. చాలా మంచిగా చెప్పినందుకు. మన రెస్పాన్సిబిలిటీ మనం वेबिनार కాకుండా మన ప్రజల్లో కూడా వెళ్ళాలి, వాళ్ళని अवेयरनेस తేవాలి. ओके, उस बात पर भी हम अमल करेंगे क्योंकि पब्लिक में मासेस में जाना और उसको अवेयर करना एक हमारी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो एजुकेटेड लोग हैं. ये वेबिनार के साथ साथ प्रैक्टिकल भी हमें होना चाहिए. अब मैं सदर जो आज के प्रोग्राम के सदर हैं जनाब अब्दुल सलीम साहब, उनकी इजाजत से हमारे एक और स्कॉलर जो मकाला पेश करेंगे, जो लेक्चरर हैं हाफिज मोहम्मद चांद पाशा, जूनियर लेक्चरर हैं गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज महबूब नगर के. उनसे गुजारिश करता हूं कि वो अपने रिसर्च पेपर के जो है फर्स्ट इंट्रोडक्शन और फाइंडिंग पेश करें. हाफिज मोहम्मद चांद पाशा. अमीरुद्दीन साहब आप अपना माइक म्यूट करें प्लीज. अमीरुद्दीन साहब अपना माइक म्यूट करें प्लीज. चलिए, हाफिज मोहम्मद चांद पाशा. वालेकुम अस्सलाम. इस वेबिनार के सदर मोहतरम जनाब अब्दुल सलीम साहब एडवोकेट और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन, खासतौर पर अल-हुदा वेलफेयर सोसाइटी के जिम्मेदारान का मैं इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने आज के दिन जो कि वोटर्स डे भी कहलाया जा रहा है, तो इस जमहूरियत और हमारी जिम्मेदारी इस उन्वान पे आज का ये मसला पेश किया जाना है, क्योंकि वक्त इस बात की इजाजत नहीं देता कि मुकम्मल तौर पर हम इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि इख्तिसार के साथ अपनी बात को रखूं. हम ये बेहतरीन तौर पर जानते हैं कि जमीन पर बसने वाला हर इंसान फितरी तौर पर समाजी जिंदगी गुजारने वाला होता है, और इसीलिए अरस्तु ने कहा था कि इंसान एक समाजी हैवान है. वो हर आन अपने एहसासात और जज्बात दूसरों तक पहुंचाने की तगोदू में लगा रहता है और दूसरों के एहसासात और जज्बात को समझने की सही भी करता है. तो इसी तबादला ख्याल और इशारा के अमल के नतीजे में एक माशरे का वजूद अमल में आता है, और माशरत इस बात की मुतकाजी होती है कि इज्तिमाई जिंदगी किसी ऐसे निज़ाम के मातहत हो जो मजबूत नज़्म और मुस्तहकम ज़वाबित के साथ कायम रहे, यानी कि जिससे माशरे में रहने बसने वाला हर फर्द अमन और अमान की फिजा सांस ले और अपने हुकूक के लिए मुतफक्किर ना हो. और इस इज्तिमाई जिंदगी में इस मकसद की तकमील के लिए इंसान इब्तिदाई से मुख्तलिफ निज़ाम है हुक्मरानी किया और क़वानीन और ज़वाबित को नाफिज किया, ताकि इसके दायरे में रहते हुए माशरे की फलाह बहबूद की बुनियाद रखी जा सके और एक तरक्की याफ्ता या सालेह माशरा तामीर हो सके. इन्हीं निज़ाम है हुक्मरानी में एक अहम निज़ाम है जमहूरी तर्ज हुकूमत. ऐसा तर्ज हुकूमत जिसमें के अवाम के जरिए अवाम के लिए अवाम की हुक्मरानी कायम होती है, और जो हुकूमत की बागडोर संभाले होता है वो सिर्फ अवाम का नुमाइंदा होता है. आज दुनिया के अक्सर ममालिक में यही निज़ाम हुकूमत कायम है, और इन्हीं में एक हिंदुस्तान भी है जहाँ पर के जमहूरी निज़ाम हुकूमत कायम है. जमहूरियत एक ऐसा निज़ाम हुकूमत है कि जिसमें इख्तिदार की तमाम राहें अवाम से होकर गुजरती हैं, और अवाम ही ताकत का बुनियादी मरकज होती है. वो अपनी मर्जी से अपने हुक्मरान चुनती है. जमहूरियत की बका में 3 ताकतें कारफरमा होती हैं. एक होती है इंतखाबात, दूसरा अदलिया और तीसरी सहाफत. इसमें पहली जो ताकत है वो इंतखाबात की है, यानी कि जो अवाम की राय का मजहर होते हैं, ये जो राय आमा
यह पब्लिक ओपिनियन का मामला है। इसकी इस्तिलाह 17वीं सदी में जॉन लॉक ने वजह की थी। हालांकि इससे पेशतर भी इसको ये तसव्वुर पाया जाता था और इस तसव्वुर के तहत इंतखाबी अमल के जरिए अवाम अपनी राय का इजहार करते हैं और कसरत आरा की बुनियाद पर ही नुमाइंदों का इंतखाब अमल में लाया जाता है, जो कि हुकूमत साजी में अपना कलीदी रोल अंजाम देते हैं। जहां तक बात है हक राय दही की, तो हमारा मुल्क हिंदुस्तान हर एक हिंदुस्तानी को जिसकी उम्र 18 साल हो चुकी है, यह हक देता है कि वो मुल्क के किसी फर्द को हुकूमत की बागडोर संभालने इसमें किसी तरह की शिरकत के लिए मुंतखब करे। ऐसी सूरत हाल में सबसे ज्यादा अहमियत हक राय दही की होती है, यानी वोट की, जिस शहरी को राय दही का हक हासिल होता है, गोया इसके कंधों पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने इस हक के जरिए ऐसे नुमाइंदे का इंतखाब करे जो साहिब बसीरत हो, दयानतदार, मुखलिस व हमदर्द हो, इंसाफ परवर और हमा वक्त अवाम की खबरगिरी करने वाला हो। क्योंकि मुंतखब नुमाइंदे हुकूमत की तश्कील, कानून साजी और मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अपना रोल अदा करते हैं। इसीलिए हक राय दही का इस्तेमाल एक मुल्क की मिली और कौमी फरीजा समझा जाता है। लिहाजा हर शहरी ऐसे अफराद का इंतखाब करे जो बेहतरीन किरदार के हामिल हो, और ताकि इससे एक दयानतदार और करप्शन से पाक हुकूमत की तश्कील हो सके। राय दही के बारे में एक और बात काबिल जिक्र है कि राय दहिंदा अपने हक का इस्तेमाल जात, बरादरी, जाती पसंद या नापसंद से बालातर होकर सिर्फ कौमी मफाद को पेश नजर रखते हुए अपने हक का इस्तेमाल करे, वरना इससे लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई के मिज़दाक मुल्क की सलामती भी खतरे में पड़ने का इम्कान होता है। बहरहाल इन्हीं चंद बातों के साथ मैं इजाजत चाहूंगा कि एक मरतबा आखिर में मैं फिर मुबारकबाद देना चाहूंगा अल हुदा वेलफेयर सोसाइटी के जिम्मेदारान को कि उन्होंने आज इस अहम मौजू पर एक वेबिनार का इनेकाद अमल में लाया गया। इंशाअल्लाह इस तफसीली मकाले को फिर किसी मौके पर पेश किया जाएगा या एक किताबी शक्ल देने की कोशिश करें, इसको तो बेहतर होगा ताकि आने वाली नस्लों को भी इससे मुस्तफीद होने का मौका फराहम हो सके। अल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम चांद पाशा साहब, आपने बेहतरीन मकाला, एक इन्फॉर्मेटिव मकाला पेश किया, एक रिसर्च पेपर पेश किया। आपके रिसर्च पेपर पे यकीन हम पब्लिश करेंगे, उसको जो है अच्छे जर्नल में पब्लिश कराने की कोशिश भी करेंगे। अब मैं आज के वेबिनार के जो प्रिसाइड कर रहे हैं जनाब अब्दुल सलीम साहब एडवोकेट, जो आज के वेबिनार की सदारत कर रहे हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि जो सदारती आपके फाइंडिंग है उसको पेश करें। आपसे गुजारिश है कि जनाब अब्दुल सलीम साहब सदर से गुजारिश है कि वो सदारती फाइंडिंग को जो है पेश करते हैं प्रोग्राम को कंप्लीट। प्लीज अपना वो म्यूट। ओके, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, welcome to everybody on this webinar program. With the due respect to Honorable Madam Dr. Chaitanya ji, IPS officer, and our beloved Superintendent of Police of Narayanpet, I am very grateful on behalf of the society that she was accepted our invitation and addressed this occasion in a very delightful manner. And she expressed all the things which is required nowadays in the society. First of all, I salute Dr. B.R. Ambedkar, who has given an opportunity by making a constitution and taking care and guidelines, making the guidelines in the constitution for all caste and communities, either upper class or lower class or backward class. And first of all, he has made very
great effort to make a constitution. This constitution was made by the Dr. B.R. Ambedkar. Time frame which is taken from the preparing of the constitution is 1 year, 11 months, and 18 days. This constitution was made in 1 year, 11 months, and 18 days, and under the leadership of Dr. B.R. Ambedkar, wherein he has recognized all rights of the persons, right to property, to vote, right to caste, right to freedom, right to religion, all these things. We have to salute our father of constitution, Dr. B.R. Ambedkar, wherein he has of right to vote. As such, we are the citizens of India. This part, irrespective of caste, religion, race, and everything. And it's a great opportunity which is made in the constitution. Right to vote is a weapon. It can be changed future of the nation. It can change the fate of the nation. It can change the nature of and fate of the leader also. If a leader who was elected in the oath of the public in general, if he not did any upliftment of the society or the nation, naturally next 5 years, he may be removed from the post by voting against him also. So it is a very great opportunity to the public in general to utilize their vote as per their choice. If the person who was elected is not acting as per the interest of the society, he may be disqualified or he may be lost his election in spite of his made efforts. So I thankful to the committee wherein the rights of the property, rights of the religions, of the all the societies is made, particularly right of vote, like Ballappa advocate was mentioned that this was amendment was made in the year. So I think I remember that amendment for 18 years was made in the period of the Rajiv Gandhi, who was the Prime Minister of the India. At the time, 21 years age is there. Subsequently, the amendment was made during the tenure of the Rajiv Gandhi. We are also thankful to the Rajiv Gandhi who has changed the age limit from 18 years. Nowadays, it is very necessary. A person who is holding the post of the chief minister, prime minister, whatever it may be, he has to look after to the ground level. What are the communities? What are the classes who are suffering? Where are there, and what is their condition, and how to uplift them by providing education, free hostels to the poor and needy persons. It is very essential. Like the Honorable Madam also addressed during course of his speech, she says that she has struggled for a lot. Though his father was a journalist, I think journalist means his struggle family. I salute to the madam because by struggling become a doctor. First he was become a doctor, MBBS doctor. Then she chose to become a IPS officer, an Indian police officer. It is a very great opportunity, and it's a great efforts made by that woman to become a superintendent of police. It is not an easy post, as we have seen that number of persons are appearing in that exams, but unfortunately they are not even qualified. But we certainly are made by our superintendent of police, a police officer. Only this is the reason, that is the democracy first of all, and the constitution wherein the right of education is made by the Dr. B.R. Ambedkar for all the castes, all the communities, all the irrespective of caste and religion. This is the main reason. This is the main reason. As such, we have become an advocate. As such, we have become a doctor. As such, we have become a collector, a superintendent of police, IPS, IS, whatever it may be. The rights as guaranteed our constitution, that credit will go to the Dr. B.R. Ambedkar, who has laid down a very beautiful principle to every citizen of the India to choose their profession, choose their activities through the constitution, which is guaranteed by the constitution. So I thanks one and all the persons who are all the eminent scholars, persons of the Hyderabad, NARAYANPET, advocates, doctors, and I think the Honorable Mr. Shahid Razi Saab, Supreme Court Senior Design Advocate also might be, he will come on the line. So I hope and trust all the eminent persons, scholars has delivered a very good speech.
regarding the right to vote and democracy, regarding the democracy. Tomorrow is the Republic Day. I congratulations advance to all the persons who are participated in this program. Advance Republic Day, 72 Republic Day, 72 or 73. I hope one and all they are who are observing this program are seeing this program by way of webinar. I am thankful to all the person being the presiding of this program. I am very thankful, particularly all the persons who are participated and addressed their keynotes on this aspect of the voters day. Thank you one and all. बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम अब्दुल सलीम साहब एडवोकेट, जो आपने अपने फाइंडिंग और सदारती खिताब किया। तो मैं यहाँ पर आज के वेबिनार के जो है अख्तिताम का ऐलान करता हूँ। बहुत ही कम वक्त में इंतहाई जो है मालूमाती वेबिनार हमने यहाँ पर मुनक़िद किया, क्योंकि हमारे जो प्रोफेसर अफरोज आलम जो है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने अपना खिताब किया, और हमारे लिए नारायणपेट की पुलिस सुप्रिटेंडेंट जो है ज़िले नारायणपेट की मोहतरमा डॉक्टर चैतन्य ने भी एक इन्फॉर्मेटिव लेक्चर हमें दिया। और तभी जो भी पार्टिसिपेंट जहाँ यहाँ थे उन्होंने अपने कीमती आरा से हमें जो है अपने ख्यालात का इजहार किया। मैं तमाम लोगों का नाम, हर एक का नाम लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर अलहुदा वेलफेयर सोसाइटी का, जिन्होंने आज एक हिंदुस्तान का, जब हिंदुस्तान अपना जो है जश्न जमहूरिया मनाने जा रहा है, आज कौमी वोटर्स डे है, इस मौके पर जानते हुए एक हसास मौजू और अच्छे मौजू पर जो है इस वेबिनार को मुनक़िद किया। इसमें शामिल होने वाले जनाब स्कॉलर्स, तमाम स्कॉलर्स मोहतरम फजलुर रहमान साहब और हाफिज चांद पाशा साहब, खलील अहमद साहब, राजवर्धन साहब, अमीरुद्दीन साहब, नंदू नामाजी साहब, अब्दुल्ला बालापा साहब, सभी जो लोग यहाँ पे इसको वेबिनार को जो यूट्यूब पर देखने वाले हमारे सैकड़ों व्यूवर्स जो इसको यूट्यूब पर कर रहे हैं, मैं यूट्यूब के जो है इंचार्ज जनाब समदानी हुरमेज हुसैन ताज, जिन्होंने टेक्निकल सपोर्ट हमें फराम किया, क्योंकि आज के दौर ये डाटा का दौर है, टेक्निकल सपोर्ट बहुत जरूरी है। मैं मोहतरम समदानी हुरमेज हुसैन एसएच हुसैन ताज जो ताज कंप्यूटर के डायरेक्टर हैं, उनका भी बेहद मशकूर और ममनून हूँ जिन्होंने हमें टेक्निकल सपोर्ट फराम किया। तो फर्दन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करते हुए एक गुलजार दहली का शेर के अपने असलाफ के गुलजार की तारीख लिखो, अपने असलाफ के गुलजार की तारीख लिखो, इससे अखलाफ के खत की होती है। लिहाजा मैं गुलजार दहलवी के इस शेर के साथ इस प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। To talk about COVID-19 and the vaccination drive. There was initial vaccine hesitation, but that seems to be sort of fading out as we go on with the vaccination process. For example, Delhi on Saturday vaccinated 86% of its intended beneficiaries for the day. There were about 81 vaccination sites in Delhi, and the state's daily target of beneficiaries is about 8,100. On Saturday, they achieved about almost 7,000 vaccinations there. There was 100% vaccination as well in some of the big hospitals of the Delhi government. There they were able to vaccinate all 100 people, which is the target for the day. This included hospitals like LNJP, Rajiv Gandhi Super Speciality Hospital, GTB Hospital, Delhi State Cancer Institute as well. Delhi achieved an impressive 86% of the vaccination target. So Kirti Dwivedi joining us live for the very latest now. So Kirti, these are figures for the national capital. These are important figures, encouraging figures. But could you give us a sense of, is this vaccine hesitation sort of fading out in the other parts of the country as well?
Well, yes, the vaccine hesitancy seems to lessen nationwide and not just in Delhi, while Delhi has shown a significant improvement from vaccinating about 53 to about 40%. Those were the figures in the last 3-4 days, but now they are at 86%. If we look at the nationwide figures, there also more than almost 16 lakh people have been vaccinated so far. It's the figure stands at about 15 lakh 80,000. So that many number of people have been vaccinated, and while earlier we were seeing an average of about 20 to 30 beneficiaries per site, right now the beneficiaries per site stand at about 54 or 55. So the numbers are growing across the country. There are two factors that are contributing to it. One major factor is the new accommodation for walk-in vaccinations, so that beneficiaries who are registered in the COVID database but are not slotted for a particular date can also come on the day they want, and they can also be vaccinated, and their data will be adjusted accordingly. So that is one reason why the numbers are growing. And the second reason is that definitely the awareness drives are working. Initially, people were a little hesitant whether there are going to be any adverse effects. So they wanted to sit back and watch, what are the symptoms that people are experiencing, those that are going through vaccination. And now that they know that less than 1% of the adverse effects have taken place, they are more reassured about the vaccination process. So that is the reason why they're also coming forward. But even if we look at the states that are doing really well or are vaccinated the highest number of people, it's southern states that are dominating. Especially Karnataka and Andhra are among the top three. Karnataka has vaccinated about 1.88 lakh people. Andhra has vaccinated about 1.47 lakh. So currently, southern states dominating the top 10 figures, but gradually the numbers are increasing pan-India.